ओके हम सभी को एक प्रॉब्लम से रहती है इन यूटिलाइजिंग आवर मेमोरी टू इट्स फुलेस्ट। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, बट द थिंग विच वी ऑल आर स्ट्रगलिंग फॉर फ्रॉम इज द फैक्ट इज basically on the process of how we are utilizing our brain, our memory most importantly. So in this video and with this video I am making out a 3-part video series where the main question which I will be going to answer is how can I boost up my memory so that I can be better at utilizing it. So 3 parts. Number 1 is encoding, number 2 storage, and number 3 retrieval. So in this video we'll be going over the encoding process. तो चलो शुरू करते हैं. Okay, so whenever we are trying to learn something or reading from book etc, we are trying to encode the data on the book into our brain, right? So कभी-कभी हम लोग कभी-कभी नहीं हमेशा almost most of the times we are not using the right proficient methods of encoding the data into our brain, and that's why we are lacking when we try to retrieve the information later on. Okay, so इस वीडियो के दौरान I will be telling you guys 7 important tips of encoding. ठीक है, जिससे पूरा का पूरा easy flow होगा. ठीक है, अंदर घुसेगा easy. ठीक है. So number 1 is focus on deep processing. The thing that we do whenever we are just going over a book or we are just highlighting it on a book is that we go through a process of shallow learning or shallow processing कहते हैं. ठीक है, so इसमें क्या होता है कि we just broadly go over the information in a superficial way. ठीक है, superficial way. ठीक है, बस मोटा ऊपर देख के जाते हैं हम लोग. ठीक है, ऐसा ही होता है इन जनरल. So deep processing मतलब क्या है? Deep processing मतलब एकदम अंदर जाके एकदम डीपली जानना कि क्या है, क्या सिखा रहे हैं या और ये कैसे मेरे काम आएगा. ठीक है, दैट्स द बेसिक ऑफ डीप प्रोसेसिंग. ठीक है, पर डीप प्रोसेसिंग करने के लिए क्या क्या लाइक द बेस्ट वे टू प्रोसेस डेटा easily for a human brain is to categorize and arrange data. ठीक है, or you can say structure information is easier to encode in the brain. ठीक है, whenever you are trying to memorize the random words car, blue, printer, book, pen, कुछ random words 5 words कहे मैंने, but in the sense that if I just tell you instead of these words if I tell you the blue, green, yellow, white, black, that would be easy, right? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि these 5, the second 5 which I told you belongs to a particular set of colors. You can easily relate to things and that's why it's easier to remember it. So number 1 is categorizing and taking in information in a structured manner. ठीक है, arrange करके सीखना है. This is number 1. Number 2 is, this is something we all think we can, but the thing is you can't learn swimming just by reading how to swim. ठीक है, this is a cliche sort of, क्योंकि often we think that if I read, if I have knowledge about it, then I can do everything. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, and the application and the real world experience is very much different. ठीक है, very different. मैं जब खुद as a SMM का कोर्स कर रहा था and whenever I was learning SEO and SMM, I used to think कि वाह मुझे तो बहुत थोड़ा आ गया है, अब मैं पूरा ठीक ठाक कर पाऊंगा. But when I went to the real work, when I went to freelancing, ठीक है, then I understood the real problems associated with my field. ठीक है, कि मुझे क्या गड़बड़ी हो रही थी, and then I became better at it because मतलब करके सीख रहा था. ठीक है, सो करके सीखना पढ़ के सीखना से कभी नहीं आएगा. ठीक है, तुम्हें करके जो सीखने वाला चीज़ है वो करके ही सीखना पड़ेगा. ठीक है, लाइक इन द सेम वे साइकिलिंग का फिजिक्स पढ़ लो, पर फिर भी अगर साइकिल चलाना नहीं आता तो साइकिल नहीं चला पाओगे. सिंपल बात. ठीक है, नंबर 3 इज सेल्फ एक्सप्लेनेशन. ठीक है, दिस इज समथिंग वी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट डू इट, बट द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज बाय टीचिंग इट टू समवन एल्स. मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ. आई एम अ स्पीड क्यूबर and from the last 5 to 4 months I have been teaching speed cubing internationally. Like I am DMing to international clients and they are some of them are interested in developing their speed cubing skills more. So ऐसे सिखा रहे हैं and technically कहा जाए तो I am an international puzzle coach in the sense that I have taught over 60 students across 18 different countries. Technically, but the thing what I want to say is that ये सिखा के ना like खुद एक अलग सी सीख मिल रही है. ठीक है, whenever you are teaching it to someone else, तुम अपनी माइंडसेट को चेंज करके एक यू आर गोइंग इनटू डीपर नॉलेज. एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डीपर नॉलेज, यू आर डूइंग डीप प्रोसेसिंग, एंड दैट्स व्हाट वी आर अप टू.
डीप्रोसेस करके जो एकदम बेसिक्स क्लियर हो के फाउंडेशन क्लियर उसके बाद सिखा रहे हो, उससे इन जनरल ऑटोमेटिकली फाउंडेशन धीरे धीरे ईजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब तुम दूसरों को सिखा रहे हो यू हैव टू लर्न इट बेटर, अ लॉट बेटर, या सो दैट्स नंबर 3, सेल्फ एक्सप्लेनेशन. Number 4 is speak aloud. So I don't know if you belong to an Indian like Indian schooling or anything, but majority like we used to read aloud in the class. Remember कि जब क्लास में मैम कहते थे खड़े हो जाओ and now start reading, and then like that slowly became धीरे धीरे कमता गया and then we don't do it anymore, right? Whenever you are in higher standard or not, like class 11 या class 10 में हो तो तुम जोर से मुंह उच्चारण करके नहीं बोलते, राइट? पर द थिंग इज whenever you are speaking aloud, ठीक है, एक विजुअलाइजेशन के साथ एक ऑडिटरी सेंसेस भी काम करता है, ठीक है, एंड रिसर्चर्स have found it that if someone is going to deep processing with only theoretical knowledge, just visualize मतलब देख के पढ़ने में, and the other guy who is visualization at the same time he's speaking aloud, the second guy performs better than the first one, because whenever you are speaking it, जो आवाज आ रही है ना वो कान में गूंज रही है, ठीक, and if you are trying to like memo things on a very short term basis, speaking aloud is the key, yeah. So going out to number 5, I think, yeah, like 5 or 6, 5. Anyways. So the next one is making handwritten notes. Yeah. So the thing is, इस युग में सभी लोग डिजिटलाइज चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो डिजिटलाइज चीज़ें में इज गुड बिकॉज यू गेट इट वेरी कॉन्साइज वे, इन अ वेरी कॉन्टेक्चुअल वे, लाइक समझ सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है. बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट हैंड रिटन वे, लाइक हाथों से लिख के अपना नोट्स नहीं बना रहे हो, या लाइक यू आर सोलली डिपेंडेंट ऑन डिजिटल थिंग्स एंड टीचर्स फॉर गिविंग यू नोट्स, जेरॉक्स एक्सेट्रा. सो द थिंग इज कि जब तुम्हारा फिजिकली एक ऐसा काम करेगा ना, लाइक तुम्हारा हाथों के साथ तुम्हारा ब्रेन कनेक्ट होगा, देन द थिंग इज यू ऑल्सो गोइंग टू डीप प्रोसेसिंग, ठीक है. सो लाइक एक साथ हम लोग अपनी ब्रेन की चीज़ें कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग आवर एनकोडिंग बेटर, ठीक है. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग हैंड रिटन नोट्स. कि अभी भी कुछ देखना, अभी भी लाइक द टॉपर्स always prefer hand written notes and their hand written notes, या किसी और के नहीं, उनके हाथों के लिखे नोट्स. क्योंकि so sometimes whenever we talk to people, sometimes we stumble, but whenever you are writing, yeah, तुम्हें लिखने से पहले सोचना पड़ता है, ठीक है. So जब भी तुम सोच रहे हो, you are going into a greater depth of the same knowledge, and so when you are writing it, your notes in your way, you are just helping yourself out. Yeah. So that's it. The last tip is learning is dependent on state. State in the sense कि solid liquid gas नहीं. State in the sense कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, लाइक बैठ के पढ़ रहे हो, लेट के पढ़ रहे हो, खड़े होके पढ़ रहे हो, it depends. And research has shown that if someone is reading in a lying position and then he has to give a test in the sitting position, so efficiency बहुत कम जाता है, ठीक है. So करना क्या है हमें कि हमें स्टेट इंडिपेंडेंस लाना है, ठीक, लाइक I don't know if you guys know Scott Young. This guy is a genius at learning things. Like he finished MIT का 4 years course in just 12 months, and समझ सकते हो क्या है, कौन से हाई लेवल पे पढ़ते हैं ये लोग. So this guy says that if you are doing the test in the sitting position in a chair and table, you should practice learning about the test or practicing the test in a sitting position for 1/4 of your time, and then like 3/4 कुछ भी काम करते हुए पढ़ो, या any like कुछ भी, like लेट के पढ़ सकते हो, खड़े होके पढ़ सकते हो, या whenever you are going for a morning walk, you can just think about the studies you are doing for just 2 minutes, and that helps a lot. क्योंकि वहाँ पे at the same time whenever you are thinking about your study while doing something else, if you can do it just 2 minutes for very focusedly, so retrieval का जो process हो, that goes like very high, ठीक है, the slope of retrieval process goes up very high. So that's it. And lastly, it's very important. Learning always dependent on context. Yeah, context मतलब क्या है? Context मतलब है कि तुम पढ़ क्यों रहे हो, ठीक है. Like if you are in class 11 and if you are preparing for JEE,
So you are putting more effort in physics PCM instead of like English, ठीक है, क्योंकि JEE तुम्हारा main focus है, right? So this is the context कि क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, क्यों, why, what is the why before you doing anything, yeah, because that's the more important, the greater reason, yeah, क्योंकि कुछ टाइम हम लोगों का क्लैरिटी नहीं बनता कि क्या करना चाहिए या क्या कुछ, so all of it depends on context कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ठीक है, the क्यों is the context. So whenever you're studying something, it's very, very important to have your goals in mind at the first. Yeah. मतलब personally what I do is I have my study table like this. Yeah. यहाँ पे दीवार है, ठीक है. So मैं दीवार पे sticky notes लगा के अपनी goals लिख जाता हूँ कि क्या I have to JEE है, तो JEE का sticky note बना के ऊपर थाप दिया, ठीक है. If I have any ET, then I will do it like that. समझ आ रही है ना? I think. Yeah, that's it. So that is the context. तुम्हारा जो goals है तुम्हारे आंखों के सामने होना चाहिए, yeah, because out of sight is out of mind, and that's it pretty much for this video. So I hope कि encoding का process समझ आया होगा कैसे क्या होता है. Anyways, like कर देना, subscribe कर देना, and comment कर देना if you have any doubts. Yeah. So अभी के लिए अलविदा. And yeah, wait. And second part is storage. So उस बारे में हम लोग बात करेंगे कि the beneficial ways of storing the memory after encoding, ठीक है. So be with this video series. Okay.